केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन हेतु निश्चित मापदंड है, which is contrary to the guidelines, Your Lordship. There is no निश्चित मापदंड है, लिखा हुआ है ना, नामांकन हेतु संगठन स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन हेतु निश्चित मापदंड है जिसके आधार पर नियमानुसार स्थानांतरण किया जाता है और वो वेबसाइट पे उपलब्ध है जी। बताइए वो क्या है जी? वही 7(3) है, arbitrary power to the deputy commissioner, Your Lordship, and where there is arbitrariness, Your Lordship. How it is arbitrary power? It is an absolute power in the hands of the deputy commissioner without laying down any guidelines. Under this provision there should be some further guidelines, Your Lordship. That's another thing. But whether this provision is ultra vires, then you will have to show that it affects it violates your right, Your Lordship, your fundamental right. Your Lordship, may please, Your Lordship. The present treat, Your Lordship, is for directing the respondents to act on the admission application of the petitioner with reasonableness, and further to declare 7(3) of the guidelines for admission 2022-23 to be arbitrary and ultra vires, Your Lordship. So, Your Lordship, the facts of this case are. What is the rule 7(3)? Rule 7(3) gives Where arbitrary. I quoted it? Your Lordship, I have. Have you quoted it in? Your Lordship, in para 33, Your Lordship. And for your Lordship's convenience, I have the entire rule. Seven 3, Your Lordship. It says, may I read, Your Lordship? So what is your circumstance of shifting? The petitioner had fallen ill, Your Lordship. Huh? The petitioner had fallen ill and his father was doing meager job, Your Lordship. And due to Corona, it was also affected. So they decided to settle at their native village, leaving that place of business or, job, Your Lordship. And that was the reason we made an application to the local KV at Sonpur. So how is it unconstitutional or ultra vires? Your Lordship, it gives, Your Lordship, arbitrary power to the deputy commissioner, Your Lordship. And where there is arbitrariness, Your Lordship. How it is arbitrary power? It says, Your Lordship, may I read, Your Lordship? It provides a method that it has to be done with prior approval of the... Your Lordship, but there has to be guidelines on what circumstances, in which circumstances. But how is the provision bad? Guidelines you can talk about that under this provision there should be some further guidelines. Your Lordship, that's another thing. But whether this provision is ultra vires, then you will have to show that it affects it violates your right, Your Lordship, your fundamental right. Your Lordship, that is because, Your Lordship, I have stated that because it is an absolute power in the hands of the deputy commissioner without laying down any guidelines, in which case he will apply his discretion and which case he will not. In my case, Your Lordship, I was made to run from pillar to post and no decision was taken. And once the NCPCR took cognizance of my matter, then only deputy commissioner came into action and draw the frivolous, action taken report, Your Lordship. What is that? At page 27, Your Lordship. Action taken report. Page 27 of the brief, Your Lordship. Should I read? Yes. उपरोक्त विषय का आपका पत्रांक दिनांकित 12/5/22 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ,
जिसमें केंद्रीय विद्यालय दिरांग अरुणाचल प्रदेश से स्थानांतरित छात्र मास्टर विवेक कुमार पिता श्री मंटू कुमार ग्राम बैजलपुर केशो सोनपुर का केंद्रीय विद्यालय सोनपुर में प्राचार्य द्वारा के तहत प्रवेश लेने से इनकार करने संबंधी शिकायत किया गया है। इस संदर्भ में सम्मानित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के संदर्भित पत्र के आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्राचार कर छात्र के पिता श्री मंटू कुमार को अपनी बातें रखने हेतु दिनांक 24/5/22 को बुलाया गया। दिनांक 24/5/22 को छात्र के पिता श्री मंटू प्रसाद एवं उनके साथ कथित अभिभावक श्री विक्की कुमार अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए। श्री मंटू कुमार ने यह अवगत कराया कि मास्टर विवेक कुमार पिता श्री मंटू प्रसाद निवासी बैजलपुर केशो सोनपुर जिला सारण बिहार के निवासी हैं। मास्टर विवेक कुमार का नामांकन केंद्रीय विद्यालय दिरांग अरुणाचल प्रदेश में आरटी कोटे के अंतर्गत दिनांक 15/7/21 को हुआ। मास्टर विवेक कुमार ने नामांकन दिनांक 15/7/21 के लगभग 3 महीने बाद ही दिनांक 20/10/21 का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर आरटीई कोटे में नामांकन हेतु प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सोनपुर पटना संभाग को संपर्क किया। श्री मंटू प्रसाद का कहना है कि प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सोनपुर ने नामांकन लेने से इनकार कर दिया। श्री मंटू प्रसाद एवं कथित अभिभावक श्री विक्की कुमार की मौजूदगी में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए छात्र मास्टर विवेक कुमार के कागजातों का हस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया एवं यह पाया गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नामांकन दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मास्टर विवेक कुमार पिता मंटू प्रसाद का प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सोनपुर अपने विद्यालय में नामांकन करने में असमर्थ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन हेतु निश्चित मापदंड है, which is contrary to the guidelines, lordship. There is no निश्चित मापदंड है, लिखा हुआ है ना, नामांकन हेतु संगठन स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन हेतु निश्चित मापदंड है जिसके आधार पर नियमानुसार स्थानांतरण किया जाता है और वो वेबसाइट पे उपलब्ध है। जी बताइए वो क्या है? जी वही 7(3) है। That is the only rule in the entire guidelines. There is no निश्चित guidelines. Who appears for Union of India for the Kendriya Vidyalaya sanction? Is there a council here for KVS? I guess not, your lordship. यूनियन ऑफ इंडिया के कोई काउंसिल है? एजी की तरफ से कोई आया नहीं? You should note this. कॉपी भी सर्व ऑन एजी। आपने दे दी कॉपी? जी जी, केवी के भी काउंसिल को सर्व हो चुका है। केवी के भी काउंसिल कर दी सर? जी। क्या नाम है? चलिए पास ओवर करिए, बुलाइए।